हेलो माय लवली पीपल्स। आज हम बोरिंग 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 स्कूल सप्लाईज को एक नया मेकओवर देने वाले हैं। मैं हूं आपकी होस्ट संगम और आज हम डीआईवाई करेंगे स्कूल सप्लाईज। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डीआईवाई के लिए हमको चाहिए ये बॉक्स। आपके पास जो भी है आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इसको मार्क कर लिया है और उसी हिसाब से मैंने इसको कट भी कर दिया है। इसको परफेक्टली कट करने के बाद अब हम इसको पेपर से कवर कर देंगे। जैसे कि हम बना रहे हैं यूनिकॉर्न बॉक्स, तो हम या वाइट पेपर या लाइट पिंक तो चल सकता है ना। अब हम बनाएंगे एक प्यारा सा फूल। तो हम उसके लिए ऐसे फोल्ड करते जाइए जैसे मैं बता रही हूँ आपको। ऐसे ही मैंने दो और बना लिए। Okay, so everything is ready. We have to just apply them on this box. Now our pencil box is ready. Now इस सेकंड DIY में हम बनाएंगे पेंसिल पेपर। मैंने एक पेपर पे फ्लावर के पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। ओके, सो नाउ अब हम इसको एक हार्ड कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे। अब हम इसको एक पेपर से कवर कर देंगे, नीटली रैप कर देंगे। एंड रिमेंबर वी हैव टू मेक 2 ऑफ देम। Our pink pencil topper is ready. Wow! Now it's done for the third layer. Take a paper. Make a thin paper. You can use cardboard, but I prefer this because it will be more flexible. Same with the red paper. The structure is ready. We have to just paint it like it should look watermelon. Wow! Fourth DIY, washi tapes. They are so easy, guys. Just see them and make them yourself. It is of 1 centimeter each. You can make any patterns, whatever you want.
cut them, and after cutting them, मेरे पास ये प्लास्टिक का पड़ा हुआ था तो मैंने इसको कट करके टेप की तरह इसके बेस बना लिया और उसके बाद इस सेलो टेप को मैंने फोल्ड करके ऐसे अप्लाई किया और उसी पे लपेट दिया एंड आवर सेलो टेप्स आई मीन वॉशी टेप्स आर रेडी। द लास्ट DIY। इस DIY में मेरे पास यही बॉक्स था। Fold it according to the box. For this, use B7000 glue to stick it perfectly. This is my first time I'm doing voiceover. Comment below if I should do it often or just I leave it. Wow!